Student, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT-JEE. So you can subscribe and learn with me. Today I took a problem of JEE Main 2018, and in this problem they ask for the values of x. Okay, so the set is defined where x is any real number, and they are given that x is greater or equal to 0 and 2 times mod of root x minus 3 plus root x into root x minus 6 plus 6 equals to 0. मतलब a value of x which satisfies this equation be the point of the set S. Okay, so what they ask about the set S, the options है contains exactly one element, contains exactly two elements, contains exactly four elements and is an empty set. इसका मतलब कोई x ऐसा नहीं होगा जो सेटिस्फाई करे. सो इस तरीके से हमें x कितने x के पॉइंट्स होंगे या सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के जो सेटिस्फाई करेंगे एस को या मतलब एस के अंदर बिलोंग करेंगे. ओके, सो आइए देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन लिखेंगे इस प्रॉब्लम का. तो लेट्स राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस. सो यू क्लियरली सी कि जो रूट हमारा डिफाइंड है दिस इज मॉडुलस मॉड फंक्शन इज रूट एक्स माइनस 3. सो अगर हम यू नो दैट अबाउट द मॉड फंक्शन, we know about the mod function, तो रूट ऑफ एक्स माइनस 3, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी इफ रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड इट विल बी निगेटिव इफ रूट ऑफ एक्स इज लेसर देन 3. so you can just write like this. You simply say this is root of x minus 3 and if this root of x is greater than or equal to 3 it means x is greater or equal to 9. Okay, and it will be of the negative sign if x minus 3 this is if x is now lies between 9 and greater equal to 0 है ना. नॉन निगेटिव तो हमारे पास है ही x. ओके, सो अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस की स्टडी करते हैं. व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 9 एंड व्हेन x इज मोर देन 9 है ना. तो उन हम सभी केसेस में देखते हैं कि हमारे पास x के कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. ओके, so the following cases arises. रहिए, तो केस फर्स्ट जो है तुम्हारे पास, इन दैट वी जस्ट टेकिंग x between 0 and 9 when then x is less than 9 and greater equal to 0. In this case this modulus is open with negative sign. Okay, so you can just say in this case this is mod of root x minus 3 is just equal to minus of root of x minus of 3. ओके, सो यू कैन जस्ट अब इक्वेशन में हम जाते हैं. इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 3 ये है हमारे पास इक्वेशन एंड प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स एंड रूट ऑफ एक्स माइनस 6 एंड प्लस 6 इज जस्ट इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन. ओके, तो अब यहाँ पर हम रखते हैं इट विल बी विद नेगेटिव साइन तो 2 ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 3 and plus this is root of x and this is root of x minus 6 and plus of 6 is just equal to 0. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज इम्प्लाइज just multiply here this is minus 2 times of root of x and this is minus minus plus of 6 and plus this is x is रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास x हो जाएगा और रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो दिस विल बी 6 ऑफ रूट एक्स and plus of 6 is just equal to 0. So you can see clearly from here this is x. Okay, and this is minus of 6 is minus of 2 so it becomes minus of 8 of root x. Okay, and 6 and 6 is 12 so this will be equal to 12 equals to 0. So we get this equation and when you are factoring it with this x root of x है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप रूट ऑफ एक्स को आप वाई मान लो तो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 8x एंड इन दिस वे. तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो. दिस इज एक्स माइनस
यहाँ पर हमको 12 चाहिए और यहाँ पर ऐड करना है, तो यू कैन जस्ट राइट in this way. This is 2 root x and minus 6 root x and plus of 12 is equals to 0, and from here आप x कॉमन ले लो root of x, तो जब root x कॉमन लोगे तो it will be root of x minus of 2, and this is minus of 6 is common, so it will be root of x and minus of 2 is just equal to 0. Okay, so from here you will get root of x minus 6 in a bracket, and this is root of x minus 2 is equals to 0. So from here you get this implies root of x minus 6 is equals to 0, or this is root of x minus 2 is equals to 0. So from here you get root of x is equals to 6, or this is root of x is equals to 2, and this implies this is x is equals to 36 or x is equals to 4. But already we are taking the x is lies between 0 and 9, so we are not taking this value, we will take only x is equals to 4. So this implies the only x is equals to 4 is the solution when x is lies between 0 and 9. Okay, आइए सेकेंड केस की बात कर लेते हैं. केस सेकेंड, जब तुम्हारे पास x जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 9, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 9, and in this case we clearly see, in this case this is mod of root x minus 3 will open with the positive sign, this is root of x minus of 3. So in this way you can just have this is 2 times, ये जो ओपन हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 3 एंड प्लस दिस इज रूट ऑफ एक्स एंड दिस इज रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ दिस इज 6 एंड प्लस ऑफ 6 इज जस्ट इक्वल टू 0. तो ये प्लस के साथ ओपन होगा 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एंड प्लस दिस इज एक्स एंड माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज जस्ट इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट क्या मिलेगा, this is 2 root of x minus of 6 and plus of x minus 6 root x and plus of 6 is equals to 0. So this x is cancelled with this, and here you will get this is your x and minus of 6 में से 2 जाएगा तो 4 root of x is just equal to 0. So from here you get root of x in a bracket, and that root of x minus of 4 is just equal to 0. This implies root of x is equals to 0, or this is root of x minus 4 is equals to 0. So this implies x is equals to 0, or from here you can just have or x is equals to 16. ठीक, तो x is equals to 0 we are not allowed to take here because we are taking x is more than 9 है ना, तो हम वो x को देखना है जो 9 से बड़ा है. तो हमारे पास केवल एक सोल्यूशन हो जाएगा फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू 16. तो इन द डिफरेंट केसेस व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 9, तब हमारे पास x बराबर 4 आंसर आ रहा है. जब हमारे पास x इज ग्रेटर दैन 9 तो x बराबर 16. इसका मतलब है कि दो x की वैल्यूज हैं, x 16 एंड 4, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड दैट विल बिलोंग्स टू द सेट, है ना. तो एस सेट से हमारे पास एग्जैक्टली दो वैल्यूज बिलोंग करेंगी, है ना. तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, दैट विल बी, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 16. तो टू वैल्यूज हैं, दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, दिस इज योर आंसर. ओके, तो इस तरीके से हमें जो भी इक्वेशन दी होती है उसका सोल्यूशन लिखना होता है. तो यहाँ पर बेसिकली जो मॉड फंक्शन है उसका यूज करा गया कि मॉड फंक्शन कैसे ओपन होता है. दो केसेस बनेंगे और उन केसेस डिफरेंट केसेस पे दो डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब and share with other students too. Thank you so much.